जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज़ हूँ। हो सकता है आप लोग यहाँ पे कोई नए लोग भी पार्टिसिपेंट्स हों जो मुझे नहीं पहचानते। तो मैं डायरेक्टर रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन हूँ और हम अपने इस वेबिनार का आगाज़ करते हैं और मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर अबीरा ज़ैनब जो हैं वो कुछ हमारा अल्लाह के कलाम के साथ हम इस वेबिनार को स्टार्ट करें। जी डॉक्टर अबीरा। जी मैम, थैंक यू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फ़स्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। ये सूरतुल आराफ की एक आयत है 52, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने उनको कुरान पहुंचा दिया इल्म से, इसमें हर तरह से तफसील भी कर दी, ईमान वाले लोगों के हक में हिदायत और रहमत है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब 2017 में मेडिसिन का पहला इम्तहान हुआ था जो कि टूसॉन एरिजोना में हुआ था, तो मैंने इसको सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था, शायद मैं उस वक्त पहली पाकिस्तानी थी इसलिए ज्वाइन किया था कि मैं देखूं, मुझे ऐसा लगा था कि ये जो स्पेशलिटी है ये पेशेंट्स की भला के लिए है या शायद उनकी डिजीज की जो एगनी है उससे बचाने के लिए है। और मैं उस इम्तहान को पास नहीं कर सकी थी क्योंकि बिल्कुल मेरी ओरिएंटेशन नहीं थी उस एग्ज़ाम के हवाले से, उसके कंटेंट के हवाले से। मैं पाकिस्तान से गई और सीधी जाके एग्ज़ाम में अपीयर हो गई। लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल का अरसा लगा और 2019 में फिर मैंने ये इम्तहान पास किया। 2 साल में पता नहीं क्यों किसी भी पाकिस्तानी ने जुर्रत नहीं की कि वो इस एग्ज़ाम की तरफ जाएं, जबकि दूसरे मुल्कों में ये एग्जामिनेशन जो था वो बहुत तेजी के साथ ग्रो करना शुरू हो गया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को, उन लोगों को जो यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट देम that at least they are the ones who wanted to learn anything new for the benefit of their patients. लाइफस्टाइल मेडिसिन के बारे में यही है कि ये प्रिवेंटिव है, ये डिजीज प्रोसेस अरेस्ट करती है एंड इट कैन रिवर्स द डिजीज प्रोसेस एज वेल। और ये वाहिद ग्लोबल मूवमेंट है जो बहुत तेजी से मुल्कों में सर्टिफिकेशंस करा रही है डॉक्टर्स को। और मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि हमारे साथ अब एक पाइनियर डॉक्टर्स या डॉक्टर्स की एक कोर टीम तैयार हो गई है जो आप लोगों को अब फैसिलिटेट करेगी इस एग्ज़ाम के हवाले से। तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि आज का जो बाकी वेबिनार का सेगमेंट है वो डॉक्टर जुनैरा और डॉक्टर सबाहत जो हैं, दे विल कंडक्ट दिस वेबिनार म्यूचुअली। आई विल स्टे हेयर। अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को ऐसा कोई सवाल जो ज़रा मुश्किल हो जाएगा या नहीं समझ आ रहा, तो ज़ाहिर एक्सपीरियंस की बेस पे शायद मैं आपको समझा सकूंगी। डॉक्टर जुनैरा ने 20 जो हमारा 2021 का एग्ज़ाम था, जो पाकिस्तान का पहला IBLM एग्ज़ाम था, उसमें ये इन्होंने क्वालिफाई किया एंड शी वाज द टॉपर ऑफ दैट एग्ज़ाम एज वेल। डॉक्टर सबाहत ने भी 2021 के एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई किया है। तो ये आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड नॉलेज देंगे अबाउट द एग्ज़ाम और जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, जिस तरह इन्होंने प्रिपेयर किया, जो आपके क्वेश्चंस हैं। मैं ये जानती हूँ कि ये बोथ ऑफ देम आर फुली प्रिपेयर्ड टू आंसर योर क्वेश्चंस एज वेल। तो मैं आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू डॉक्टर and can start your presentation. Madam, I'll continue. Assalamu alaikum and very good morning to you all, and hope you're in good health and good spirits today. So हम अपना जो है इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं IBLM का। मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है? शेयर हो गई। चलिए जी, मैंने डॉक्टर शगुफ्ता का इंट्रोडक्शन कराना था। तो वी ऑल नो अबाउट डॉक्टर शगुफ्ता. शी इज द पायनियर ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन in Pakistan, and she's working as a director of Rifa University, and she's the founder of Synchronized Lifestyle Program and practicing medicine free clinic from last 18 years through lifestyle modifications. So we have Dr. Sabahat with us also. She's the Deputy Director IBLM, and she is going to help me throughout this presentation. So let me tell you about lifestyle medicine first. What is lifestyle medicine? It is the use of evidence-based lifestyle therapeutic interventions, which is whole food, plant-based diet,
predominantly. And regular physical activity, restorative sleep, stress management, avoidance of risky substances, and positive social connections. And we use these modalities as primary modalities for the treatment, and it is delivered by the clinicians trained and certified in this specialty to prevent, treat, and often reverse chronic disease. So this concept is not new. This is the foundation of conventional medicine, and all clinical practices guidelines for the top lifestyle-related chronic diseases support lifestyle medicine as first line of treatment before medication. So Dr. Shagufta has covered the history of this ABLM and IBLM exam, and this lifestyle medicine, how it developed. But let me briefly cover this up. So this American College of Lifestyle Medicine was created in 2004. And it continued in Loma Linda University as a department. And then in JAMA 2010, an article came which explained the competencies of a physician who is going to practice life 12 by American Medical Association. And later 2015, ABLM and IBLM was formed. And the first examination of ABLM was conducted in 2017. And later maintenance of certificate was introduced in 2019. Okay, you can see how this is spreading. You can see all over the world how different exams are conducted. The data for 2017 diplomats is 2,473 physicians and professional practitioners 774. But now in 2024, it was near 4,000. So it is rapidly spreading all over the world. So you can see different countries which have their own lifestyle medicine associations, and they are conducting their own exams all over the world. So basically the exam which is conducted in America is the American Board of Lifestyle Medicine, and the same exam, same curriculum, everything which is conducted all over the world, it's called International Board of Lifestyle Medicine. So exam is the same, but only the names are different. So what is International Board of Lifestyle Medicine? It sets, maintains standards for assessment and credentialing of physicians and PhDs. It educates different physicians, health and allied health professionals. There is a common standard language for LM protocols globally. It differentiates between the evidence-based LM professionals and non-evidence-based LM professionals. There is a benchmark and there is a coordination all over the world, and there is a seal of approval if you have the certification, which is globally recognized. So being an IBLM diplomat, there is professional credibility. So you have the certification, you can, whatever you can advise, you have the credibility. You are the early adopters, this is new knowledge who's going to shape the evidence-based field of lifestyle medicine. So you're the early adopters, and you can create the brand awareness. There is a personal satisfaction for this profession. And once you'll know about lifestyle medicine, you will understand this point. And there is ability to manage most challenging cases, which is very difficult to treat otherwise. But through LM, you can handle them. And of course, there is a lot of information regarding the physicians, their own health, their lifestyle and everything. You will learn a lot and you'll practice what you preach. And there is an evidence that if you will practice lifestyle medicine on all the pillars, you'll preach it well. So good investment, and this is a good investment in your future. The practice of lifestyle medicine may be a potential antidote to provider burnout or a key to renewed provider joy, health, and well-being. Okay, let me tell you the requirements for the exam. In Pakistan, we are conducting the exam under two categories. First is the lifestyle medicine physicians. The prerequisites are 30 hours of online non-live CME. CME is the continued medical education. It is a curriculum which you need to study yourself. There is 10 hours of in-person CME. This can be converted into online depending on the situation. And there is the requirement of a case study which needs to be submitted.
Certificate is issued by International Board of Lifestyle Medicine, and you'll be called a diplomat of IBLM. For allied health professionals, which can be all allied, the occupational therapist, the physiotherapist, the pharmacy individuals, psychologists, and many other. They all come under allied health professionals, and therefore the prerequisite for them is master's or PhD. There is the 30 hours of online non-live CME and 10 hours of in-person CME. So case study is not a requirement for allied health professionals. Exam is same, issued by IBLM, and you'll be called a diplomat of IBLM. This is the CME 30-hour CME, which is available on American College of Lifestyle Medicine website. You will do a purchase yourself. You can use your credit cards or bank transfers, and you have to cover this curriculum yourself. And there are many other options also on the American College of Lifestyle Medicine website. And I'm just showing you the two options. This is the option we did in Pakistan last year, and this is another one. So this is the core competency module. You can either buy that or this one. Okay, regarding the exam dates and the conference, the second IBLM online exam will be conducted this year on 30th October. The venue will be Marriott Hotel, Islamabad, Pakistan. And 27th and 28th of October, there will be the International Lifestyle Conference. And this conference is going to cover your 10 online or in-person CMEs. Regarding the exam format, duration will be 4 hours. And there will be online multiple choice questions. Most of them are clinical oriented. There, for the physicians, it is 150 multiple choice questions, but for the allied health, it's 120 multiple choice questions. The venue is Marriott Hotel, and date is 30th October. Okay, regarding the fee, for the medical doctors, there is registration requirement. The fee is $99 US. Exam fee is $999. The course which you need to buy yourself from the website is $499 USDs, and total cost is $1,597 US. And the course you are going to buy yourself, the rest the money will go in the Palm account, and Palm is going to handle all your registrations and fee transfers and everything. For allied health professor, the registration is $49 US, exam fee is $799 US. The course is the same, and total cost is $1,347 USDs, and the same amount will go into Palm Bank account, and the rest $499 you need to purchase the curriculum yourself. Okay, G. After you clear the exam, there is the condition of maintenance of certificate. It's called MOC. So option 1 is that every 5 years you do a 30 hours approved CME available on the ACLM website. And each year you have to do 3 articles and answer those articles. And option 2 is then you have to appear every 10 years for the exam if you're not doing all these things in option 1. And if you unfortunately could not clear the exam, you can reappear in the exam after 12 months, and the fee is $100. Okay, here the registration guidelines. The deadline for IBLM registration is 15 July. And we have this email, call, text, or send voice, this number, you can note it down. And the Palm is offering a discount of $200 US and a free 1-year Palm registration if you register before 15th May 2022. This is one of the good news I wanted to, I announced before. Okay. Okay, what is Pakistan Association of Lifestyle Medicine? This is the first international association in Pakistan bringing a community of healthcare professionals from diverse fields and specializations, and they are working towards preventive and therapeutic healthcare system through 6 pillars of lifestyle medicine. PALM is founded by Dr. Shagufta Feroz in 2016, and few of her coaches and associates has become the member of Lifestyle Medicine Global Alliance in 2017.
So if you become a PALM member, so you have all these facilities, you have discounts of on international conference exam, IBLM exam fee. There is free registrations for quarterly seminars by Dr. Shagufta. There are happiness moment, which is going to be this year on 19th and 20th of March. And there will be sessions with champions of happiness moment. And there's a PALM newsletter. And this is I'm giving you the contact information for the PALM membership. Okay, so this time we are going to introduce the IBLM preparatory course on behalf of Pakistan Association of Lifestyle Medicine. It is a 12-week course from July to September, and we've planned the classes on weekends. The cost is 30,000 PKR Pakistani rupees. The components of the course will be rapid review of all the curriculum, sample question practice, guidance with case study, and then finally a mock exam. And the good news is if you register before 15th May, so you'll get a 5,000 PKR discount and a 1-year free membership of PALM. Thank you. Okay, so I'll open. Thank you so much for such a comprehensive presentation. It was really nice journey through which you took us. And I hope many of the questions would be coming to answer them. Yes, Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Zunaira. Assalamu alaikum. Thank you, Dr. Zunaira, for giving us a very comprehensive view of what we're supposed to do. I just wanted to एक मुझे clarification ये बस चाहिए कि let's say if I don't have that वो जो आपकी requirement है CME की, and I can apply now, और जब वो आपका before the exam जो conference होगी, so that will cover the CME. नहीं जी देखिए, there is a requirement of a 30-hour CME. It's a curriculum you need to buy. ठीक है, और वो this is a requirement for the IBLM exam. You have to go through that curriculum. There are sample questions. You can practice them, and then you need to get a certificate of completion of that 30 hours of CME. That is a requirement. You can't skip that. And then for the 10 for hours, the prerequisite. Prerequisite applying. हाँ. Yes. उसमें जो CME के हैं वो कैसे complete करने हैं? Let's say I'm a professional, but yes. जी पूछे आप पहले question पूछे. हाँ जी. मेरा question ये है कि for applying the जो prerequisite है, let's say I have been working in my private sector in my clinic, and I have not attended many of the conferences for some time. But now I want to apply, so I don't have those CME hours. So वो मैं कैसे complete करूँगी? Dr. Kanwal, excuse me. I guess she's asking about you want to apply for IBLM exam. This you are asking? You can apply. If you will apply, the CME will after that applying that you have to do the CME. It's not the prerequisite of applying for the exam. It's the prerequisite for taking the exam. ठीक है. So if I apply, and that's when then I जो CME है उनको complete करना है मैंने. Yes, exactly. There is a requirement of there is a requirement of 30 days before the exam. You need to complete all the requirements like 30-hour CME, case study, and for the in-person CME जो conference होगी उसकी easy है, वो आप जो है ना पहले भी कर सकते हैं अपने exam से और बाद में भी कर सकते हैं. But for the CME and the case study, it has to be completed 30 days before the exam. Okay, thank you so much. Thank you. जी और questions जी. Mohammad Abbas wants to ask something. Fazil Kareem. जी मैं ये सब जो अभी आप बात कर रहे थे 30 आवर्स की जो ऑनलाइन करना है, इसकी कोई ड्यूरेशन है, यानी किस मंथ में करना है या ये जब भी आप कर सकते हैं, यानी इज इट टाइम बाउंड? एक चीज. दूसरी चीज जो आपकी केस स्टडी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि वो क्या चीज है. अच्छा जी, इसका है कि जो आपके 30-hour CME की सर्टिफिकेट जब आप पढ़ लेते हैं ना, तो then you get when you complete that curriculum, you'll get a certificate. That certificate needs to be done 36 months
not more than 36 months before the exam. It has to be within 36 months within the exam, your certificate of completion of CME. तो आप ये कभी भी शुरू कर सकते हैं, आप आज से भी शुरू कर सकते हैं. And my advice is कि if you are planning for the IBLM exam, you should immediately buy the curriculum and start reading it. क्योंकि जो हम course offer करेंगे वो जुलाई से will be a review course. So then if you register for the review course, you have gone through the book, तो आपकी बड़ी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स सारे आंसर हो जाएंगे. तो my advice is कि आप इसको immediately, if you're planning, you should buy it and start reading it. Or actually, Dr. Abbas, the thing is that course, that curriculum is just a sort of a journey which you will go through so that you get to know about the basics of lifestyle medicine. So that it's a sort of your aid to appear in IBLM, that you have to go through that curriculum, and then you have to uptake that online certification, and then so that it's easy for you to appear in the exam. Can I add little more, Sabahat and Zunaira? जी श्योर मैडम. अच्छा डॉक्टर अब्बास, ये जो 30 आवर्स की वो CME कहते हैं, एक्चुअली द अमेरिकन्स वांटेड टू स्टैंडर्डाइज द एग्जाम. सो जो 30 आवर्स आप पढ़ेंगे, दैट इज फ्रॉम द मैनुअल और द रिव्यू, जो उनका बोर्ड की जो बुक है, काफी मोटा सा मैनुअल है, वो आप जब पढ़ लेंगे तो आपका, और उसके बाद आप सर्टिफिकेट एक देंगे कि आपने ये पढ़ लिया है, तो फिर आप यू विल बी एलिजिबल, आई वुड से कि आप उसके बाद ही इस काबिल होंगे कि आप एग्जाम में बैठ सकें. और आप जब आपको सर्टिफिकेट एक क्लियर हो जाएगा आपका कि आपने वो पूरा पढ़ लिया है, तो फिर आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी. थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि मैंने भी पहली दफा दिया तो मुझे ये लगा कि मुझे किसी और कॉन्फ्रेंस से कोई CME चाहिए. नहीं, जो स्टैंडर्ड करिकुलम अवेलेबल है फॉर IBLM एग्जाम, जो पूरी दुनिया का एक ही है, वो आपने परचेज करना होता है अमेरिकन कॉलेज से, जिसकी आपको जुनैरा ने एक स्लाइड भी दिखाई कि 2 तरह के कोर्सेज हैं, और मैं एडवाइस करूंगी कि एटलीस्ट एक आप परचेज करें. एक के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम आपको फैसिलिटेट करें, बट यू डू परचेज एटलीस्ट 1 कोर्स विच शुड बी लाइफस्टाइल मेडिसिन बोर्ड रिव्यू कोर्स, जहां से ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं. तो वो आप जब परचेज करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपने ऑलरेडी 30 आवर्स ऑफ CME की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, और आपकी लर्निंग इज नाउ स्टैंडर्डाइज्ड लर्निंग. यू आर सेम लाइक अ डॉक्टर हु इज डूइंग ABLM इन अमेरिका. ये इसका मकसद है 30 आवर्स. और जो 10 आवर्स कॉन्फ्रेंस के हैं, वो हमें हमारी कॉन्फ्रेंस को वो रजिस्टर करते हैं. इस तरह नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में कोई भी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लें और आपको वो 10 CME आवर्स मिल जाएंगे. नो, जो कॉन्फ्रेंस अब हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो भी एक सेट पैटर्न है जो हमें दिया गया है कि उस कॉन्फ्रेंस के क्या क्या कंटेंट जरूर होंगे. then the 10 hours of CME of that conference will be accepted. और वो कॉन्फ्रेंस जो है वो बिल्कुल एग्जाम से 2-3 दिन पहले है. आप जब उसके लिए रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को, कॉन्फ्रेंस की रजिस्ट्रेशन भी हम खोलेंगे और कुछ हफ्तों में, when you are registered for that conference, so that gives a surety कि okay you will be attending the conference. तो वो 10 CME hours जो है वो उसके अंदर आते हैं. I hope मैं उसको शायद कर सकी हूँ clear further. Thank you very much. And my second question was case study के बारे में बता. अच्छा, केस स्टडी जो है वो बहुत आसान है. जब आप पढ़ना शुरू हो जाएंगे, वो फॉर्मेट जो होता है वो हमारे पास होता है. जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड कर रहा होता है, उसको फॉर्मेट अमेरिकन कॉलेज ने दिया हुआ है. वो आपको भेज दिया जाएगा, आपको गाइड कर दिया जाएगा. प्रेपरेटरी कोर्स की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है. मैंने आपको बताया आई कुडंट पास द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज आई वाज जस्ट इग्नोरेंट अबाउट एवरीथिंग. जो लास्ट बैच है जिसका हमारा माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आया, उनको एक ट्यूटर ने 6 महीनों तक गाइड किया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम. लेकिन हमने वो 6 मंथ्स की ट्यूटरिंग के बाद ये लर्न किया कि दैट वाज टू मच. So this year we'll be offering, Zunaira is the in charge for those tuition sessions, that this year we'll be offering 3 months of tutoring. Sunday का दिन होगा, बड़े आसानी से आपके लिए वो होगा, और उसमें आपको बिल्कुल तैयार किया जाएगा फॉर एग्जाम.
और केस जो है वो कोई लंबे चौड़ी बात नहीं है, उसका एक फॉर्मेट है। आपने फर्ज करें आपके पास डायबिटीज का कोई पेशेंट है, आपने उसका लाइफस्टाइल मॉडिफाई किया, आप 1 मंथ का टाइम रखें या 6 वीक्स का टाइम रखें, so what changes you have observed in that patient, that is going to be your case study. You could choose yourself also by modifying your lifestyle, by applying the principles of six principles of lifestyle medicine. So you can start preparing for the case after you have bought the syllabus and you have started reading the syllabus. Only then you will be more connected to the lifestyle medicine. ठीक है, और वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। एग्जाम हमारा कहीं अक्टूबर में है तो वो कहीं अगस्त की कोई डेट होती है, एंड ऑफ अगस्त विल बी द डेट वेयर यू आर सपोज्ड टू सबमिट। ठीक है, ग्रेट, थैंक यू। जुनैरा, आप ये प्रेजेंटेशन शेयर करेंगी या? जी, ये हमारी मेरा फेसबुक का जो ग्रुप है हम उस पे शेयर कर देंगे, जो हमारा IBLM का ग्रुप है। आर यू अ मेंबर? एक्चुअली ऑब्जेक्टिव मेरा ये है कि मैं ये समझ सकूं कि मुझे कहाँ रजिस्टर करना है, क्योंकि आई थिंक फॉर मी आई वुड नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर समथिंग लाइक दिस, सो आई वांट टू हैव अ हेड स्टार्ट, यू नो। थैंक यू। जी बिल्कुल, आप मेंबर हैं हमारे फेसबुक के ग्रुप के, IBLM के? जी 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 जी, बस ठीक है, यू कैन क्वेश्चन, आप जो भी आपका क्वेश्चन आप वहां पूछ सकते हैं। And the websites are also given for the information regarding, they can have it. Dr. Zunaira, if you can share that slide. हाँ जी, IBLM जी, IBLM की जो वेबसाइट है, आप No, the वहां पे PALM, from where they can get the information, and from PALM. अच्छा, can I add on something? यानी कि मुझे ये लग रहा है कि you people have माशाल्लाह you're making things very easy for us as such के maximum facilitation है, but वही बात है कि since this is going to be a new journey for many of us और इसमें बहुत से steps हैं, तो ये हो सकता है कि जो आपका Facebook page है उस पे यानी whatever step, जैसे PALM के लिए register होना है तो उससे पहले हमें एक अवेयरनेस आ जाए कि लिसन प्लीज डू रजिस्टर फॉर द पाम, यू नो, हम कोई स्टेप मिस कर दें। अच्छा, अब ये हो रहा है, इसके लिए आप रजिस्टर हो जाए। डेफिनेटली, अभी मैंने आपको बताया, देखिए 15th May इज योर डेडलाइन, टिल 15th May यू टू डिसाइड कि आपने जी ये करना है नहीं। 2 चीजें आपने डिसाइड करनी है कि आपने IBLM का एग्जाम देना है या नहीं, आपने कोर्स लेना है या नहीं। इफ यू डिसाइड रजिस्टर थ्रू पाम फॉर द कोर्स एंड द IBLM, and before that, if you want to start reading the curriculum, you can buy the curriculum before that 15th May. You can go through the curriculums, you can see, and then you can register before 15th. And we can buy curriculum directly. जी जी बिल्कुल, आज ही आप बाय कर सकती हैं ACLM की वेबसाइट से। दूसरा ये कि ये जो इनकी डॉलर में पेमेंट करनी है, ये हम अगर करेंगे तो कैन समवन इन USA पे फॉर अस? यस श्योर, उसमें तो कुछ नहीं है, बट ये कि इजी होगा कि आप अपने नाम से क्रेडिट कार्ड आपका जो है वहां से करें, तो आपके नाम के साथ हो तो बेहतर है। It's okay, Dr. Zunaira. Even some of our friends, वो उन्होंने दूसरे फ्रेंड्स ने, they facilitated them because हर एक का क्रेडिट कार्ड US डॉलर्स का नहीं होता ना, तो they can easily go for it. And I would like to add on कि once you will enter into the, we are like a family. This PALM is like a family, and Dr. Shagufta Feroz is like more than a mother to us. When we entered this field, तो madam facilitated us like with every step. Just baby steps भी मैडम told us how to do. तो इसमें आपको परेशान घबराना नहीं है, कोई भी ऐसे, we all are here. Exactly, and rather it's like we will facilitate you, and PALM is going to take everything in charge of everything. Yeah, so इसमें तो मैं आपको second करती हूँ कि I just had one meeting with Dr. Shagufta Feroz, and I must say that I mean, she had connected me to the Facebook page, then she sent me message for the webinar, even though I was getting it through the Facebook page, and I really thought कि she's so passionate about this, like you know, कौन ऐसे करता है कि आपको बार-बार बताता भी है कि आप ये आएं, आप ज्वाइन करें, आप ये भी करें। और अभी मैंने ये ज्वाइन कर लिया था, फिर भी मुझे जो है किसी और से मैसेज आया कि किसी टीम में से किसी ने कहा डॉक्टर कमल से कि प्लीज जरूर ज्वाइन कर लेना। सो आई मस्ट अप्रिशिएट कि इतना अच्छा लग रहा है कि you know, being part of a group जो आपको
अच्छे तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन भी करवाएगा, गाइडेंस भी दे रहे हैं, and they want you to be learning this thing. So thank you so much Another for the Kawal, meeting. I would like to add कि we are a family, we are like a family. तो आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, आप हमारी फैमिली में ऐड हो जाएंगी, तो हम बहुत ख्याल रखते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का. जी जरूर जरूर इंशाल्लाह. जी शफक शेख को अनम्यूट करें. She wants to. Hello. Awesome. Assalamu alaikum. Can जी you hear me? शफक. Assalamu alaikum जी. Yes, we can hear you. Okay, good. I'm working as an assistant professor of medicine right now. I'm really interested in this just because I love lifestyle medicine myself. I was just going through stuff online and I found out about Palm, and this is how I just came across this. So I have a few questions. I wanted to know if what is the scope of lifestyle medicine in Pakistan as far as working and practicing is concerned, and also if I move out of Pakistan, let's say in a year or so, will this be helpful for me even if I go somewhere other than America? Actually, this is international exam, international certification, and it is recognized in the whole world. It's not only recognized in America. Just like in our presentation, you must have seen that there are centers all over, and it is recognition में तो इसके कोई issue नहीं है. And your other question, what is the scope? The scope is very broad because it's not now the medicine, because you must have seen that we are moving toward the pandemic of chronic diseases. And the current conventional medicine, it's not addressing the chronic diseases. It's only formulated for the acute diseases. So when you will come along this journey, you will learn that how the principles of lifestyle medicine is going to change the chronic diseases, how it's going to have the impact. And the principles of lifestyle medicine are so encouraging. Once you will know them, you will definitely follow them for yourself and for your patients. Okay, great. So if I go somewhere, I can practice lifestyle medicine even in some other country as well, right? Yes, after getting the certification, you will get the lifestyle medicine physician, nomenclature will be that you will be certified lifestyle medicine coach. Okay, And it's for the whole world, like it's global. Okay, and we get the certificate after. Yeah, I would like to add a little more for Shafaq. Shafaq, if you are interested regarding the scope in Pakistan, so let me add to your, just for the information of all of you who are here, that this is now being recognized, not officially, but unofficially by Pakistan Medical Council, which is PMDC, because our application has gone to them, and the PMC is going to recognize the certifications which are done even locally. We are running an international board of lifestyle medicine certification, and we are organizing the 6-month certification also, and we will be changing the certification to 1 year PGD also, postgraduate diploma. So nationally, we are working at all levels. Undergrad level, it is being introduced in the Medical College of Rifa University. So definitely when we incorporate this speciality in colleges, we need faculty. So there is a scope. Then I would like to explain it a little more. Lifestyle medicine works at a personal level. It is for self-care. It is for patient care. It is for community care. There are so many awareness programs which you can be part of those awareness programs as well. And regarding this international recognition is there, but all the countries are at the same level as Pakistan is. Probably Pakistan is going little faster than the other countries, because this is being told to me by American College that we are amongst few countries in the world who have started this qualification at university level. Probably Pakistan है, America है, और शायद Australia and Britain. ये 4 countries हैं जिन्होंने undergrad और postgraduate level पे ये certifications शुरू की हैं. So if they have started these specializations in their countries, so you know that there is a scope for the practitioners or the people who are already certified. इस वक्त जो स्टेटस है लाइफस्टाइल मेडिसिन सर्टिफाइड फिजिशियंस का, अगर मैं बात करूं
माइनस यूएस या माइनस नॉर्थ अमेरिका, इस वक्त वो अटैच हो रहे हैं स्पेशलिस्ट के साथ. लाइक इफ कार्डियोलॉजी क्लिनिक इज देयर, तो देयर विल बी अ क्लिनिक ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन, बिकॉज द डॉक्टर नीड्स द हेल्प ऑफ अ लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट टू फैसिलिटेट द डिजीज ऑफ हिज और हर पेशेंट्स. इस वक्त करंटली ये स्टेटस है, ठीक है. और अगर कोई अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल से है, तो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल और मेडिकल प्रोफेशनल्स का लाइफस्टाइल मेडिसिन का मोर और लेस एक ही जैसा स्टेटस है, मोर और लेस. मैं उसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बट अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कैन बी अ लाइफस्टाइल मेडिसिन कोच फॉर अ स्पेशलिस्ट क्लिनिक टू. सो ये इस वक्त स्टेटस है, और ये ग्लोबली एक ही स्टेटस है. हम थोड़े से बेहतर हैं बाकी मुल्कों के से इन कंपैरिजन. Okay, I get it. Thank you so much for such a wonderful explanation. Just one more thing. जब हम लोग एग्जाम पास कर लेंगे तो इसके कितने अरसे बाद do we get the certificate? सर्टिफिकेट, यू विल गेट द सर्टिफिकेट विद इन वीक्स. बहुत क्विक रिजल्ट आता है, बहुत क्विक रिजल्ट अनाउंस होता है. और उसके बाद हम ये चाहेंगे कि आप अगर पाकिस्तान में हैं तो डू रजिस्टर फॉर आवर सर्टिफिकेशन, बिकॉज उस जो हमारी एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, वो उसको लोकलाइज तरीके से आपको जेल इन करवाते हैं हम अपनी सर्टिफिकेशंस के अंदर. मेरा ख्याल है ये इन दोनों ने, डॉक्टर सबात और डॉक्टर जुनैरा ने की हुई है. Probably they can comment more that how their international certification was complemented or supplemented by the certification which they are still doing. They are part of the current certification which is going on, which is for 6 months. So probably they can add more to it. No? Okay, and we would want to know how to register for that also, please. I might have missed it because I joined a little bit late. Actually, I haven't introduced that certification here now. Yes. Yes. I'll share the flyer of that in my Facebook group. I think July se shuru ho raha hai, 5th jo certification hai. हाँ, but I won't encourage you, Shafaq. I don't think so. You should enroll for 2 certifications, because it will be very difficult. And the certification which is being done in Pakistan, the purpose is to transform you completely. And you will, inshallah, later on, once this international certification you are done with, तो फिर हम आपको कहेंगे कि आप आए या आप टेस्टिमोनियल्स लें जिन्होंने वो किए हुए हैं. फिर आपको मजा आएगा कि ये कोई और ही लोग हैं, ये कोई और ही डॉक्टरों की मखलूक तैयार हो जाती है लाइफस्टाइल मेडिसिन सर्टिफिकेशन के बाद. ठीक है? Right. Okay, thank you. And I'm sorry I'm asking too many questions. Just one more question. We are here to answer your questions. Thank you. I just wanted to know, you said the preparation classes will be every week on a Sunday, so it might not be possible for me to come. So is it possible if we can attend the classes online? No, classes are online. Classes are not in person. Classes will be online. Thank you. That sounds perfect. Thank you so much. Thank you. Welcome. जी, और कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहता है कोई? जी, साइमा उमर, yes, you can ask the question now. जी, अस्सलाम वालेकुम. मेरा क्वेश्चन ऑलमोस्ट उन्होंने पूछ लिया. मेरा भी यही क्वेश्चन था कि स्कोप क्या है. अब जैसे मैडम ने भी बताया कि रिफा में ऑलरेडी यू पीपल हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस फील्ड इनटू द बेसिक साइंसेस. सो मेरा अब ये क्वेश्चन है कि आप लोगों ने किस तरह कितने आवर्स दिए हैं, कितने आवर्स बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और विच फैकल्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट, और इज दैट अ पार्ट ऑफ कौन से ईयर्स में वो करा रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर्स में, या कैसे आप लोग उसको लेके चल रहे हैं? Saima, I know you are from High Tech University, no? Yes, ma'am. Yes, okay. Actually, we are not supposed to go into that curriculum details, but I can see Dr. Brigadier Maqsood is here. Brigadier Maqsood Sahab is the Vice Principal of our medical college. So, Dr. Sahab, if you can spare a few minutes and you just can tell them that just briefly, I don't want you people to get deviated from the IBLM, but Dr. Maqsood can give us very briefly how we have incorporated this in our medical college. Dr. Saab, can you hear me?
Assalamu alaikum. Walaikum salam. I hope I am loud and clear. Yeah, you are. Thank you. Yes, what we have done is we took up lifestyle medicine core curriculum and embedded into our total curriculum. We believe lifestyle concepts are not competitive of traditional medicine. They are complementary to traditional medicine. So whole of the curriculum has been added with lifestyle medicine component, and it is actually embedded into whole of the curriculum, right from the first year up to the final year. No year is bereft of lifestyle medicine sort of concepts, and that we have done because that will aid us in putting these concepts into our assessment processes also. So as we all know, assessment drives learning. That way we will be able to galvanize our students into maturing the concepts of lifestyle. That's what we did in Rifa University, to get whole of the concept embedded into whole of the curriculum of our college. And just let me add a few more lines. जी साइमा जी, मैं सिर्फ 2-4 लाइनें ऐड करना चाह रही हूँ. डॉक्टर साहब ने जो एक्सप्लेन किया, the curriculum which is being the curriculum, the content or the curriculum which is being embedded is exactly the same which is being taught in USA. We are following the guidelines of Dr. Beth. If you go on the American College of Lifestyle Medicine website, you will find that Dr. Beth from Harvard University, from Harvard Medical School, is the main, I would say, the energy or the leader behind this lifestyle medicine movement in America. And she has started introducing lifestyle medicine to medical school in USA. So she has written a book on how to incorporate the curriculum. We are following the same content, but Dr. Saab has made according to the policy of our universities. Okay, so this is about almost welcome. Any other question? Anybody wants to ask something? I think there is a question in the chat box written by someone. ये question है, is this kind of registered naturopath? No, not at all. Not at all. I don't know who has asked this question. Can I know the name of the person who I phone? Dr. Asiya, you have asked this question. Can you elaborate your question, please? Yes, Assalamu alaikum. मेरा नाम आसिया, हाँ जी, डॉक्टर आसिया रफी. मैं एक्चुअली मैं कनाडा में रहती हूँ और यहाँ पर मैंने एक ज्वाइन किया है CSNN, Canadian School of Natural Nutrition. So like मेरी फ्रेंड हैं ये जुनैरा भी और सबाहत भी, तो मैं इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप भी करें, तो मैं भी यहाँ पर ये पढ़ रही हूँ. तो वो मुझे एक्चुअली इसका जो जैसे ये जो मैं कर रही हूँ वो RHN है, और जो आप लाइफस्टाइल मेडिसिन करवा रहे हैं, तो इसकी एग्जैक्टली डेजिग्नेशन क्या है? और मैं ये पूछना चाह रही थी कि is it same like ये जो आप अपनी like food से lifestyle plus herbs? No. Asiya, let me clarify. Yeah. Lifestyle medicine is a branch of medical science. ठीक है, ये एक स्पेशलिटी है और इसको फाउंडेशन टू ऑल मेडिकल साइंसेस कहा जा रहा है. ठीक है, और इसके एग्जाम इट इज नॉट द सेम एज इट इज बीइंग टॉट इन नेचुरोपैथी, राइट? बिकॉज मैंने एक बोर्ड सर्टिफिकेशन नेचुरोपैथी में भी किया हुआ है. ये वो नहीं है, राइट? इट इज नॉट नेचुरोपैथी, इट इज नॉट न्यूट्रिशन. अगर आप उसके अंदर न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ये वो वाली न्यूट्रिशन नहीं है. इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, और इसीलिए जो इसका क्राइटेरिया है वो डॉक्टर्स का है, ऑल स्पेशलिटीज ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स.
Or unfortunately, healthcare professionals do not cover naturopaths. So naturopaths are not part of even the healthcare professionals, but nutritionists are. So dietitians and nutritionists are part of healthcare professionals, लेकिन naturopaths नहीं, and it is not naturopathy. It is different. आपको इतने extensively researches दिखाई जाएंगी जो कार्डियोलॉजी में हो रही हैं, जो कैंसर्स में हो रही हैं, जो आर्थराइटिस में है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में मेडिकल सेंटर्स में हो रही हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर हो रही हैं. सो दिस इज अ मेडिकल स्पेशलिटी. ओके 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 सही. मैं चाहूंगी मैं इसको ज्वाइन करूं इंशाल्लाह. मैं फिर जी another information for you कि जी कनाडा में लाइफस्टाइल मेडिसिन की अपनी सोसाइटी, इट्स कॉल्ड कैनेडियन सोसाइटी ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन. So yes, you can join that. Yes, you get all the information, and there are practicing lifestyle medicine physicians also in Canada. Okay, ठीक है. Yes, but I think Zunaira, Canada still is not. I think so. Canada still is not organizing the exam. Am I right? नहीं जी, वो अमेरिकन कॉलेज से ही वो दे रहे हैं. हाँ, अभी उन्होंने, मतलब आप ये देखें, इतना बड़ा कंट्री, इतना इवॉल्व कंट्री है, हमें थोड़ा सा, हम पाकिस्तानीज अपने आप को बड़ा ही लो ग्रेड पे रखते हैं. तो ये भी आपको समझना चाहिए कि पाकिस्तान का लाइफस्टाइल मेडिसिन की दुनिया में बहुत अच्छा स्टेटस है, बहुत अच्छा स्टेटस है. जैसे जैसे once you are going to land into this LM world and you will be get exposure, पूरी ग्लोबल में लोगों को पता है कि डॉक्टर शगुफ्ता ने वहां पे स्टार्ट किया हुआ है. इसलिए नहीं कि कोई उसकी कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है. नो, the Western world recognizes you and appreciates you only on the basis of your intellectual abilities. ठीक है? तो हम माशाल्लाह, हम पाकिस्तानीज जो हैं, we are वेरी कॉम्पिटेंट, और हम लोगों ने बहुत प्रूव किया है लाइफस्टाइल मेडिसिन में. बहुत सारे काम नेक्स्ट ईयर में आप देखिएगा, हम इंशाल्लाह बहुत से कंट्रीज को सुपरसीड कर जाएंगे. सो इंशाल्लाह. सो लाइफस्टाइल मेडिसिन ने हम पाकिस्तानीज को बिसाइड्स training and teaching our doctors, it has given us an opportunity to prove as a nation कि हम काबिल लोग हैं. पहले भी आपको पता है वेस्टर्न वर्ल्ड में पाकिस्तानी डॉक्टर्स वर फेमस फॉर देयर कैपेबिलिटीज. तो हम उसी हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स का स्टेटस को मेंटेन करते हुए हम लाइफस्टाइल के मेडिसिन के अंदर भी अपना एक अलग से इमेज वहां पे रजिस्टर जरूर कराएंगे. एंड यू पीपल आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये जो वेबिनार आज हुआ है, इसकी अब सीरीज ऑफ वेबिनार होगी. द नेक्स्ट विल बी, इट विल बी अनाउंस्ड ऑन दिस पेज जो जुनैरा ने IBLM का बनाया हुआ है, बट आई थिंक इट इज ऑन 17th April. एक 17th April को आएगा, मिड ऑफ द मंथ में करेंगे, और एक फिर 15th May को आएगा. तो सीरीज ऑफ वेबिनार्स होंगे बिफोर वी क्लोज आवर रजिस्ट्रेशंस. And the group is open to all types of questions. अगर इनको, जुनैरा को, सबाहत को लगा कि ज्यादा जरूरत है वेबिनार्स की, तो we can organize more webinars. जैसे सबाहत ने कहा, लाइफस्टाइल मेडिसिन पीपल आर लाइक अ फैमिली. ये बहुत बड़ा आपको डिफरेंस महसूस होगा कि वी ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर, वी ऑल आर ऑलवेज देयर टू हेल्प ईच अदर. ये आपको एक बहुत बड़ा, मैं बिकॉज आई एम इनटू प्रैक्टिस 32 years हो रहे हैं मुझे अब, तो मैंने बहुत सी स्पेशलिटीज के साथ भी काम किया है. लेकिन जो बहुत बड़ा डिफरेंस है लाइफस्टाइल मेडिसिन का, वो इसका एक माहौल बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मजा बड़ा आता है. वी एंजॉय, वी वर्क लाइक अ कम्युनिटी. सो इंशाल्लाह वेबिनार्स चलते रहेंगे इंशाल्लाह हमारे. जी, another thing Asya also, जी, since it's a uniform exam all over the world, so if you want to take the preparatory course from PALM, you can register for that. And you can give the exam in your country, no problem, but you can take the course from here, from PALM. Okay, from IBLM, right? No, from Pakistan Association of Lifestyle Medicine. You can prepare for the exam, and you can sit in the exam from anywhere in the world. Okay, it's online, right? Yes. Okay. Thank you so much, Zunaira and Dr. अच्छा, आसिया, Thank you so much. जो कोर्स है ना, वो ऑनलाइन है, लेकिन इफ यू वांट टू अपीयर इन कनाडा, तो probably you have to go to US to appear for the exam in person. Exam will be in person. Okay. This year the exam will be in person, but for the preparatory course you can register with our association because it is going to be very, very economical for you.
Okay, right. And I think very few countries are offering these preparatory courses. 2 या 3 शायद और ऑफर कर रहे हैं. तो ये एक आपको बेनिफिट हो सकता है कि आप कोर्स पे हमारे साथ रजिस्टर हो जाए and you can appear in the exam in Canada. Okay, from America. ठीक है. Yeah, America, yes. Thank you so much. बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके. Nice meeting you. Thank you. जी, और कोई क्वेश्चन है? फजल करीम चेक कर लें. I think we are done. No more questions. जी, डॉक्टर शगुफ्ता, फिर हम क्लोज कर दें अपना वेबिनार? Yes, बिल्कुल. Because they all might be member of your IBLM interest group. कोई भी इनके सवाल होंगे, ये थोड़ी सी सर्च करेंगे, अपनी थोड़ी इंडिविजुअल ये एक रिसर्च करेंगे, then they might have more questions, so they can put all the questions in the interest group. We will be coming again on 17th April. You Inshallah. Yes, बिल्कुल. Chalenji, thank you on the behalf of PALM. We thank you all for joining our webinar. And जी, I hope कि आप लोगों के अब इसका आप information लेना शुरू करेंगे, and I'll be ready to answer your questions on the Facebook. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.